Welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. And to discuss the stories, we are joined in the studio by business analyst Jayanta Das. Jayanto, welcome to our studios. Thank you very much. And we begin with the headlines. The Union Cabinet approves revival package of more than 1,64,000 crore rupees for Bsnl. Domestic stock indices rise around 1% amid mixed global cues. Sensex closes above 55,800 points. Nifty settles near 16,650 level. And Brent crude prices hover around $105 per barrel. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज को मंजूरी दी। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में करीब 1% की तेजी। सेंसेक्स बढ़कर 55,800 से ऊपर हुआ बंद। निफ्टी 16,650 के स्तर के करीब पहुंचा और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $105 प्रति बैरल के आसपास। नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। मैं हूं विशाल शर्मा और सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर। मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसमें भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड और बीएसएनएल के विलय को भी मंजूरी दे दी गई है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस पैकेज का उद्देश्य बीएसएनएल को दूरसंचार के क्षेत्र में दीर्घकालिक और जीवंत इकाई के रूप में खड़ा करना है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज की मदद से बीएसएनएल की सेवाओं को अपग्रेड किया जाएगा। जयंता, हम आज बीएसएनएल को लेकर के जो आज बहुत बड़ी खबर आ रही है, 1,64,000 रुपए का रिवाइवल पैकेज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। कितना महत्वपूर्ण है ये पैकेज और बीएसएनएल के लिए कितने दूरगामी प्रभाव इस पर पड़ने वाले हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि ओवरऑल टेलीकॉम क्षेत्र का जो ग्रोथ इस वक्त देश में चल रहा है और खास करके ये देखते हुए कि करीबन 3 प्लेयर्स में सीमित है ये ग्रोथ। कहीं ना कहीं बीएसएनएल वाज आउट ऑफ द पिक्चर। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 5 साल छोड़कर उसका पहले का जो दौर है उसमें चाहे कनेक्टिविटी की बात करें चाहे लास्ट माइल की बात करें, बीएसएनएल के बहुत ज्यादा मेजर एक रोल रहा, जहां पे पूरा भारतवर्ष में कहीं ना कहीं जो आखिरी जो गांव तक लोग बैठा उनको जुड़ने के लिए, और उसी के ऊपर ध्यान रखते हुए ये बहुत जरूरी था अगर सरकार को टेलीकॉम पूरा सेक्टर के ऊपर अलग से रीअसर्ट करना है कि हाँ सेक्टर का इंपॉर्टेंस और खास करके बीएसएनएल जैसे मल्टी बेहुमत पीएसयू उसका इंपॉर्टेंस ध्यान रखते हुए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन वाज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट जो पेंडिंग था काफी दिनों से। ये जो निर्णय है, मैं मानता हूं इस निर्णय को वापस एक चर्चा में हम लोग वापस शायद बहुत जल्दी अगले 6 महीने के अंदर आएंगे, जहां पे सिर्फ 2 या 3 प्लेयर नहीं, हम फिर से 4 प्लेयर्स के बारे में बात करना शुरू करेंगे। और ये जो पैकेज है रिवाइवल का, ये बीएसएनएल के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे इन टर्म्स ऑफ सरकार का जो अलग से असर्टिवनेस है कि टेलीकॉम क्षेत्र में एक मेजर प्लेयर फ्रॉम पीएसयू भी होना चाहिए। हालांकि ज्यादातर देखा जा रहा है कि सरकार आज का तारीख में बैंकिंग क्षेत्र के अलावा जहां पे भी जो बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है देश के लिए वहीं सरकार मौजूद रहना चाहता है। लेकिन बीएसएनएल का ये जो ओवरऑल रिवाइवल पैकेज है, इस पैकेज के दौरान सरकार ये रीअसर्ट बेशक कर रहा है और मैं मानता हूं कि इस पैकेज के दौरान जैसे मैंने कहा अगले 6 महीने से 1 साल तक काफी प्रभाव हम देखेंगे मार्केट में, खास करके कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी जोन अब 5G में शिफ्ट होने वाला है बहुत जल्दी और उसका ऊपर जो उसमें प्रयास करना है, जो भी रिक्वायरमेंट है, एक ह्यूज जंप है बीएसएनएल के लिए। Well, Jayanta, as you said that BSNL was the entity which had the last mile connectivity to the last village of the remotest corner of the country. But do you feel that it is coming a bit late in the day, given the humongous infrastructure that BSNL had created for itself, and also
it should have come a bit earlier? That's a very good question. In fact, between, if I may put it a bit more strictly, between the 2G and the 4G shift over, somewhere I think BSNL got lost in terms of, delivery, in terms of this branding as a major telecom partner. And that's also the reason, because there was a major rehash happening, because we knew there was a time when most of the telecom companies were sick and they wanted a revival package from the government, which the government also, brought in forward in terms of a package, in terms of the fees to be paid and things like that. So keeping that in the backdrop, yes, BSNL was somewhere lost in the woods in between, but that's nothing to do with the strength of the company. It more happened because of how the economic environment changed, and obviously BSNL required support, which never happened. Support not in terms of market and businesses, because finally the product is going to sell, it's not the government who's going to sell the product. Support in terms of your technology upgradation, because telecom is one business, as you know, and if I quote Mr. Sunil Mittal, it needs almost an hourly call in terms of technology upgradation, and it has to be thought 3 years in advance. So it's not what the technology upgradation which the companies are discussing today. They would be probably discussing the network, the bandwidth, and the technology parameters which are required in year 2026, 2025. And that's how telecom companies work. So keeping that in mind, there is always a call of huge investments, and that's where I guess this revival package, in no uncertain terms, says that the government is going to remain a major player or intends to remain an important player in the telecom sector, and that's why they want to revive BSNL and bring it back to where it is. जी, सरकार ने BSNL के साथ साथ भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को भी, इनके विलय को, मर्जर को भी मंजूरी दी है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क का जो ऑप्टिकल फाइबर का जो पूरा नेटवर्क है पूरे देश में फैला हुआ, उससे भी BSNL को बहुत ज्यादा अब एक ताकत मिलने वाली है। नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि तकनीकी बदलाव इतना जल्दी हो रहा है। हम लोग कुछ दिन तक पहले तक बोलते थे ब्रॉडबैंड शहर का कौन कोने तक पहुंचे हैं, तो आज का तारीख में अब ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का बात किया जा रहा है। स्पीड 20 times 30 times मोर, शायद ये 20 GB का स्पीड जो आज का तारीख में हमें अच्छा लग रहा है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का, वैसे कल का दिन में क्यों विद इन 3 to 4 months शायद हम देखें कि 100 GB स्पीड भी शायद कम पड़ रहा है जिस तरह का रिक्वायरमेंट होता है। इस तरह से जब प्रदर्शन होता है तो बहुत जरूरी होता है कि कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं हो, और जो हमने देखे टेलीकॉम क्षेत्र में खास करके रीग्रुपिंग, कंसोलिडेशन, बाइंग आउट, इन सब के द्वारा फाइनली 3 to 4 प्लेयर्स में आके मौजूद हुआ टेलीकॉम क्षेत्र में। तो ऐसे सिलसिले में जहां पे आपने कहा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का जो कंपनी अलग से मर्ज करने का बात जो हो रहा है, तो उसमें बेशक ये एक बहुत ज्यादा, और क्योंकि नहीं तो रिवाइवल पैकेज सिर्फ अलग से काम नहीं कर सकता है। देयर इज नो यूज सेटिंग अप अ न्यू फाइबर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। तो यहाँ पे सरकार ये कोशिश कर रहा है कि नॉट ओनली अ फाइनेंशियल पैकेज, बट साथ में जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स मार्केट में अदर कंपनीज के साथ जो मर्ज करा सकते हैं BSNL को मजबूती करने के लिए, वही होगा। लेकिन वंस अगेन आई वुड लाइक टू रीएम्फसाइज द फैक्ट दैट दिस इज अ गवर्नमेंट्स वे ऑफ सेइंग that they would like to have an important role and say in the overall things in the telecom sector as a player. I mean, government is anyway managing the regulatory part. There is no doubt on that. But as a player, they want to remain as a important critical player, being in the competitive market what it is right now. Because as कोई भी मार्केट में अगर 2 या 3 प्लेयर्स रहे तो हमेशा मैं मानता हूँ, हालांकि इंडस्ट्री प्लेयर्स कुछ और उनका सोच है, मैं मानता हूँ एक ऑलिगोपोलिस्टिक मार्केट जाके क्रिएट होता है। और उसका सबसे ज्यादा अगर आप देखें, अगर अपने आपको सवाल ये करें कि पिछले 6 महीने या पिछले 1 साल में क्या हमारा जो यूजेज दरों में उसमें कुछ फायदा हुआ, नहीं हुआ है। बिकॉज कहीं ना कहीं ऑलिगोपोलिस्टिक मार्केट के द्वारा मार्केट में एक स्टेबिलिटी आया, प्राइस पॉइंट एंड ऑल में आरपू बेशक बढ़ा है कंपनीज का, लेकिन उस तरह का स्थिति ना बने। बहुत जरूरी है कि एक चौथा इंपॉर्टेंट प्लेयर विथ ह्यूज फाइनेंशियल पावर इन सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट आए, और बेशक BSNL क्यों नहीं, बिकॉज BSNL हैज बीन वन ऑफ द इनिशियल प्लेयर्स रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। And it is heartening even that the BSNL and the entity being the government entity, exactly, being competitive in the market amongst the other private players, it gives that much more strength and that much more confidence among the investors and also the public in general. So that is a good thing. So now moving on to रुक करते हैं शेयर बाजारों का। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज करीब 1% का उछाल आया। सेंसेक्स 55,800 अंक से ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 16,650 के स्तर के करीब पहुंच गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.99% की वृद्धि से 548 अंक उछलकर 55,816 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.96% की तेजी से 158 अंक बढ़कर 16,642 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार में BSE मिड कैप इंडेक्स 0.9% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.38% की बढ़त में रहे।
The Sensex and the Nifty today climbed around 1%. Both stock indices logged gains amid mixed global share markets. The Sensex closed above 55,800 points, while the Nifty settled near 16,650 level. The Sensex rose 548 points or 0.99% to finish at 55,816. The Nifty also surged 158 points or 0.96% to end at 16,642. And in the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap climbed 0.90%, while the small-cap index ended 0.38% up. In the Sensex pack, 25 companies posted gains, while 5 logged losses. Sun Pharma was the top gainer as it climbed 3.4%. State Bank of India added 2.8%. Larsen & Toubro rose 2.7%, and Asian Paint ended 2.5% up. While on the other hand, Bharti Airtel tumbled 1.3%. Kotak Bank declined 0.9%. Bajaj Finserv and NTPC both fell 0.4% each. And in the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, all sectors gained except telecom sector, which lost 0.8%. Healthcare and capital goods, both sectors climbed 1.7% each. IT gained 1.3% and the basic material index rose 1.2%. The overall breadth of the Bombay Stock Exchange trade was positive as shares of 1,686 companies gained while 1,635 fell and shares of 144 companies remained unchanged. जी, और शेयर बाजार के बारे में ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ बाजार विशेषज्ञ अविनाश गोरक्षकर इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो। गुड इवनिंग। जी अविनाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। हाँ नमस्कार जी। अविनाश जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि 2 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार में तेजी, और इस तेजी के पीछे क्या ट्रिगर्स आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, बाजार में 2 दिन की तेजी जो आई है वो ज्यादातर इसलिए आई है क्योंकि मार्केट्स को ऐसा लग रहा है कि आज जो यूएस फेड मीटिंग की जो कमेंट्री आएगी यूएस फेड गवर्नर से, वो थोड़ी सी पॉजिटिव होने का संकेत है। उन्होंने ऑलरेडी पहले भी कहा है कि रेट हाइक तो आने वाला है। अभी वो 75 बेसिस पॉइंट आता है या 100 बेसिस पॉइंट आता है, वो आज पता चल जाएगा। लेकिन जो कमेंट्री है वो मार्केट्स ऐसा उम्मीद लगा के बैठे कि आने वाले जो इंटरेस्ट रेट हाइक रहेंगे वो थोड़े से इस हाइक के मुकाबले में कम रहेंगे। इन्फ्लेशन को लेके काफी चिंताएं यूएस में है, लेकिन सभी का मानना है कि यूएस में अभी इन्फ्लेशन मोर और लेस पीक आउट हो चुका है और इसका मतलब है कि हमको शायद आने वाले क्वार्टर्स में यानी कम से कम 2-3 महीनों के लिए जो ट्रेंड है वहां पे हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा से उसको बढ़ाने की कोशिश यूएस फेडरल गवर्नमेंट नहीं करेगा। और यही कारण है कि मार्केट्स में, यूएस मार्केट में थोड़ा बहुत मार्केट्स पिछले 2 दिन से उछले हैं और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में भी आपको पॉजिटिवली देखने को मिला है। तो क्या नतीजा आता है, क्या कमेंट्री आता है, उसकी हमको सबको इंतजार करेगा क्योंकि ये मिडनाइट इंडिया टाइम में रिलीज होगी और उसका इम्पैक्ट आपको कल के बाजार में स्टॉक मार्केट में शेयर के प्राइस से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। Well, Avinash, it's almost given that the Fed would would push up the rates, as in if everything goes as per the reports which are trickling in. So, how do you see the spin-off effect of the rise in the Fed in the Indian markets? No, I think basically markets have already factored in a 75 basis or even a 100 basis point hike. But as I mentioned to you, the commentary and the kind of data points which possibly the Fed would give out is something which is very important, because if there is a chance for some sort of a lesser hawkish kind of commentary from the governor and where there is some indication that interest rates may not be hiked in the same proportion as what they might be hiked in the earlier phase, then I think that would be a better indication. The bigger number also markets are also awaiting is on Thursday, that is tomorrow, the US GDP second quarter numbers are going to be released. In case the GDP grows in a negative kind of trend, then I think the commentary by the Fed on the state of the economy and how quickly they could be coming out of that is also critically important. So I think these two macro data points are very important. Markets will be closely watching at what kind of comments the governor would make. And I think that would decide the future trend in the market, because, we have seen a bounce for the last few days, but before that, there was a lull in the market, there was a little bit of selling. So I think there's a lot of uncertainty on these two macro points, which I think which should get clarified by tomorrow.
All right. Let's talk about the IT sector. As in with the Fed almost certain to raise the rates, and also its impact on the IT market, it slows down the economy to an extent. And as we can perceive that it will have a spin-off effect because IT is one sector which has a substantial presence there as well, and it will have its after effects in the Indian market as well. So what we are trying to understand here is that, do you see the IT sector in the Indian market being corrected more, or in the coming times getting down to a more consolidated position? Yeah, definitely. See, I think you have mentioned a rightful point that in case the U.S. economy goes into a recession, then the first sector to be impacted would be obviously the domestic IT sector, because a lot of business comes from U.S. And U.S. being the mother market, most of the IT companies have a huge amount of business exposure here. So I think hopefully, we all believe that the U.S. recession may not be long enough, but definitely over the next 6 months, IT companies would definitely find that their incremental revenue growth could come under pressure. Margins are already coming under pressure because huge amount of labor attrition is yet happening, and most of the companies we have spoken have said that at least for the next 3 to 4 months, attrition would remain at a higher level. So that means, cost pressures would continue to rise. So my sense is that in the next 6 to 8 months, at least till December or January, one can expect definitely this sector to be under, performing with the broad market. And I think it will take a long time before, recovery comes in. This is going to impact almost every IT company, big or small. But the larger IT companies could obviously face a bigger pressure, companies like TCS, Infosys, because they have a large exposure here. So I think it's better to be a little cautious here, because we could see weaker numbers, going forward until and unless, the U.S. economy starts turning around. And the currency effect is already playing out. I think as long as the rupee is weak, I think my sense is that most of the companies will have to even pass through some of the rupee currency benefits to the U.S. vendor. So I think net, it's better to stay away for some time here. All right. जी गुरक्षकर जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद। और अब रुक करते हैं रुपए के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 13 पैसे कमजोर होकर 79 रुपए 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.37% गिरकर 106.79 के स्तर पर रहा। बात करें एशियाई बाजारों की, अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दरें बढ़ाने की आशंकाओं के बीच एशियाई शेयर बाजारों में आज सीमित दायरे में मिला जुला कारोबार रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.4% की वृद्धि दर्ज हुई। जापान का निकेई 0.2% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.1% की बढ़त में रहे। दूसरी तरफ हांगकांग का हैंग सेंग 1.1% लुढ़क गया और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.1% के नुकसान में रहा। यूरोपीय बाजारों की बात करें तो अंतर्देशीय कारोबार में यहां हल्की बढ़त रही। लंदन का FTSE 100 0.6% और फ्रांस का कैक तथा जर्मनी का डेक्स दोनों 0.3% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। And moving on to the U.S. markets, the U.S. stocks ended sharply lower yesterday amid weak consumer data, which fueled fears about spending. The Dow Jones Industrial Average Index lost 0.7%, and the S&P 500 declined 1.2%, and the Nasdaq Composite plunged 1.9%. Jayant, a very interesting point we see here is that there is a fear of spending there. In the U.S. now, of course, with the recession kind of looming in the background, it's quite understandable. But this is something which is really quite unprecedented, as in we have not seen this thing in some time now. So how do you see this? Well, typically this is the pre-phase of, as you said rightly, pre-phase of recession setting in, where people immediately pause their spending. That's the first reaction when people believe markets are not going to be, or at least the prices are going to fall further in the next 6 to 9 months. Having said so, at least 3 or 4 major states, including California, in the last 1 month have seen a 25% price drop in real estate. So these are just early figures, but certainly not comfortable figures, in that sense. So obviously the spending has taken a hit
as a result of which people have paused whatever they need to do. Right. But having said so, what I also believe is typically over the next 2 to 3 months, the rate hikes would create a further dent in terms of demand growth in the market. True. And we need to see that whether the recession sets in much more earlier than what we were expecting it to. Having said so, also almost all analysts across the board say that it's going to be a deep recession period once again, which the world may not have seen in the last 15-20 years. God forbid, even if it's true, I guess the pause for spending is obviously justified at this point of time. True. So this is what we have is an overheated market. We have a $3 trillion cash benefit being offered to almost all citizens from a particular income level and below by the US government to tide over the COVID crisis. And I think this violent injection of funds into the economy, number one, which is basically helicopter money, which people like to call, and secondly followed by obviously huge inflation, which US has never seen over the last 40 years, I think. True. 40 to 45 years. So I think it's quite a double whammy in terms of understanding where the markets would be headed here on. जी, ये जो वैश्विक मंदी की जो आहट की बात की जा रही है, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था क्या जनता अछूती रहेगी या भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ असर पड़ेगा? बेशक उसके ऊपर असर सिर्फ भारत की पूरा दुनिया के ऊपर ही असर होने वाले हैं और हम सबको ये उम्मीद ये है कि देखिए अब अमॉन्ग द न्यूज एक घटनाएं जो घटे हैं कि रशिया और यूक्रेन, हालांकि उन दोनों देशों में युद्ध चल रहा है आपस में, लेकिन उन्होंने अभी एक्सपोर्ट्स का ग्रेन एक्सपोर्ट्स का कुछ में कहीं पे कुछ राहत लेके अभी दोनों देश ने एग्री किया हमें कहीं पे एक्सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि थोड़ा वर्ल्ड प्रेशर भी था। तो इस तरह का घटनाएं भी साथ में घट रहे हैं। तो मैं मानता हूं अगर अचानक ऐसे कुछ दिन आ जाए जहां पे हम लोग सुबह उठ कर देखें कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कुछ पैक्ट एग्री हुआ है, जहां पे हम सबको पता है बिहाइंड द सीन लगातार कोशिशें जारी हो रहा है, तो वो एक छोटा बहुत एक अच्छा निशानी रहेंगे जहां पे ओवरऑल रिसेशनरी मार्केट में शायद दोबारा कुछ अलग से उम्मीद लेके आए और उस वक्त शायद भारत को झटका जो हम उम्मीद कर रहे हो उतना ज्यादा ना हो उस तरह का सिचुएशन में। बट दीज आर ऑल फार फेच्ड सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ सिमुलेशंस, क्या क्या हो सकता है और उसका दौरान क्या क्या भारत को फायदा तो नहीं बट भारत का नुकसान कम हो सकता है। लेकिन आपका सवाल जो शुरुआत में था एकदम सही है, रेजिलियंट इंडिया नहीं हो सकता इस वक्त। वजह इसलिए बिकॉज पूरा दुनिया इज ग्रेजुअली ग्रोइंग इट और इंडिया में भी वही सब फीचर्स है जहां पे आप इन्फ्लेशन देखे काफी ऊंचे स्तर पे है, ब्याज दरों में वृद्धि हो रहा है, जो जो घटना जो होता रहता है मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर वाइज अक्रॉस द वर्ल्ड जो हो रहा है इंडिया में भी बेशक हो रहा है। जी, IMF ने अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपना जारी किया है और वो ये बता रहे हैं कि भारत की जो 2022 में जो है इस साल जो वृद्धि दर अनुमान को उन्होंने घटा करके 8.2 से घटा करके 7.4 किया है, ये क्या इसके पीछे वो क्या कारण आप इसको मान सकते हैं कि क्या इसके पीछे सोच काम कर रही है? देखिए, मूल तौर से तो ये है कि एक ओवरहीटेड इकोनॉमी में खास करके कोविड के बाद जिस तरह का कठिनाई सामने आता है रातों रात और साथ में ग्लोबली जो इम्पैक्ट हुआ है इस वक्त मोर देन इंडिया का डोमेस्टिक फैक्टर मैं मानता हूँ इंटरनेशनल फैक्टर्स में जिस तरह का इम्पैक्ट हुआ है। आप कच्चे तेल का कीमत देखिए $105 से लेकर $115 के ऊपर बरकरार है। हालांकि उम्मीद है कि रिसेशन के साथ साथ शायद इसमें भी क्रैश हो, लेकिन क्रैश हुए नहीं। लेकिन टिपिकली अगर आप पिछले 20 साल का ऑयल का वो देखें, जहां पे भी एक रिसेशन का बातचीत शुरू होता है जहां पे ऑयल का प्राइस में थोड़ा बहुत नरमी शुरू हो जाता है साथ साथ, तो इस बार वो नरमी अभी तक आया नहीं है। उसका मुख्य वजह शायद ये है कि यूक्रेन रशिया का वॉर नहीं था, इस वक्त है वो एज अ थर्ड फैक्टर टू इम्प्रेस अपॉन जो भी ग्लोबल फैक्टर्स चल रहे हैं। तो ये सारी चीज देखते हुए मैं मानता हूं कि जो स्थिति है इस वक्त अगर स्टेटस को भी मेंटेन हो जाए स्थिति का मैक्रो पैरामीटर्स के दौरान तो शायद अच्छा रहे भारत के लिए, लेकिन उसका उम्मीद मैं इसलिए कम करता हूं क्योंकि ग्लोबली स्थिति और यहां से खराब होने वाला है और ये चीज ध्यान रखते हुए मार्केट्स में एक हम नरमी उम्मीद कर रहे हैं। डिमांड फॉल अगर ग्लोबली भी होगा उसके ऊपर भारत का भी बेशक असर पड़ेंगे, इंटरनेशनल फंड्स फ्लो वगैरह दूर होगा, लेकिन थोड़ा अगर पॉजिटिव ट्रिगर हम देखें इस वक्त मैं मानता हूं तो ओनली पॉजिटिव ट्रिगर कैन बी रशिया यूक्रेन का वॉर अगर रातों रात कहीं ना कहीं एक पैक्ट के दौरान खत्म होकर या एटलीस्ट सीजफायर भी अगर होता है तो एक शायद ट्रिगर रहेगा। Well, recession and inflation, the double whammy, as in, of course, to an extent, to a level, they are quite intertwined as well. But Jayanto, I'll like to draw your attention to a very important thing here. How do you see the job market panning out with these double whammy kind of striking, not only the markets but the economy overall? Well, obviously, if it's a stagflationary scenario, I mean, even if it's a child's guess what the job markets will actually happen to. But what I do believe is in India, we have
a story of two nations playing out, whereby globally, although there is a recessionary factor, if Indian companies, specifically led by IT industry and all, there is a fair, strong demand happening in the undercurrent line, So, and that demand right now, the chances of it growing up may not be that much with a recession looming in the horizon, but that demand has existed. Automobile manufacturers as well as others have picked up in the last 3 months, so there is once again a demand in terms of jobs from that particular sector. So our specifically top 5 sectors who would be absorbing more labor at this point of time, the chances are they might not feel an immediate hit. But if recession sets in, and I guess in the next 2 quarters we'll be able to know and be able to pronounce a much more better view. Jobs obviously will be affected. To what extent one doesn't know, but yes, we can't have a recession where jobs are increasing and companies are not growing. So that can't happen. Indeed, that is really as in something to think about, and obviously for the authorities to be that are there to think about, some food for thought. So now moving on to oil now. Oil prices today rose around 1% amid reports of lower inventories in the United States, and cuts in the Russian gas flows to Europe offset concern about weaker demand and a looming U.S. interest rate hike. In the intraday trade, Brent crude was trading at $105.30 per barrel, while the WTI crude prices were at $95.95 per barrel. Well, here as well, Jayanta, in the oil sector as well, the U.S. interest rate hike getting factored in here. So at the moment, $105.30 per barrel. Where do you see this going? Well, certainly, if we're discussing recession 5 minutes ago, then when you read the news, the chances of oil prices going down further is what's more prevalent, I believe, than the remaining. But what we need to see is how fast they go down. It's not how slow they go down. I think that's what we need to ponder on, which will be beneficial partly, despite the rupee weakness which we have seen over the last 1.5 months, partly to the Indian economy. So that could be, and as going back to Vishal's question, and that could be some positive for us if oil prices further fall from here, so that at least cushion some of the weaknesses of the rupee. But then, as I said, oil prices have been holding on, which for me is at this point of time quite a surprise, because basically it can be factored in because of the Russia-Ukraine thing, but still they have somehow managed to hold on. But then oil prices are known to crash. And I don't think that can be a wishful thinking right now. It can happen if recession actually sets in well. और अब बात करते हैं सोने की कीमतों की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 60 रुपए बढ़कर 50,660 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। सितंबर आपूर्ति वाली चांदी 315 रुपए की मजबूती से 55,020 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,737.60 प्रति औंस, जबकि चांदी $18.75 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। जनता, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे कि सोना को हम देख रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से, बल्कि और भी ज्यादा अवधि से, कि 50 से 51 हजार के दायरे में ही कारोबार करता दिखाई दे रहा है। और हम उम्मीद कर रहे थे शायद इस पे थोड़ा और तेजी आए सोना में, लेकिन वो हुए नहीं है। और मैं मानता हूं कि मेटल्स में अभी भी सोना इज वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट्स टू इन्वेस्ट इन एंड रिमेन इन्वेस्टेड इन। खास करके इंडिया में हम सबको पता है कि ज्वेलरी का भी अलग से डिमांड होता है रादर देन गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। बट अगर आप दरों का बात करें तो अभी भी मैं मानता हूँ मेटल क्षेत्र में इट्स अ गुड प्रोडक्ट स्टिल विद 2 to 3 year टाइम टू इन्वेस्ट। जी, जयंत दास, हमसे बात करने के लिए और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डाल लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के पुनरुद्धार के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज को मंजूरी दी। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में करीब 1% की तेजी दर्ज। सेंसेक्स बढ़कर 55,800 से ऊपर हुआ बंद। निफ्टी 16,650 के स्तर के करीब पहुंचा। Union Cabinet approves revival package of more than 1,64,000 crore rupees for BSNL. Domestic stock indices rise around 1% amid mixed global cues. Sensex closes above 55,800 points. Nifty settles near 16,650 level, and Brent crude prices hover around $105 per barrel. Well, that's it in this edition of Market Mantra. From the entire team here, it's goodbye till we meet again the next time. Namaskar.